Okay, super. So I just take the screenshot. Yeah, so hearty welcome to everybody for the SIT Chat, a weekly event organized by me as a volunteer in the SIT group. I am a mentor helping companies improve their performance and achieve growth using doHow, a methodology developed by me. That's my professional activity. And as a volunteer service, I organize a SIT Chat every week. And I have to happen to discuss with Sunil, and it was really very inspiring journey he had. So I thought we could listen to his story tonight. Before we get on to that, let me give you a brief background about what SIT Chat is all about. And then we can get into the discussion. SIT Chat, basically, my idea of starting this about a year back, almost a year back, was to really give an opportunity for various people to showcase themselves. At the same time, giving the opportunity for some of the members to listen to those people who are achieving some success in their startups or in their businesses, or they've got wisdom to share from their life itself. So we've got multiple topics which is of interest to everybody, mainly in terms of business and also on the work and life front. And these activities are going on every week. Like I said, since almost 1 year now. Not 1 year would be a little too much, but almost 1 year. And every week we choose a topic and talk about that. Before I get into the topic, I just want to share our disclaimer, which is mainly to what do you call it as, give a kind of a caution to you to ensure that you are not simply copying whatever we said here, but consult your professional trusted advisors. Of course, what we say here is definitely with validation, because we are talking about people who have experienced something and they're sharing their experience. So it's not something which is just out of the book. However, please consult your professional advisors before you really implement from the wisdom and insights you get from our show. And today we are going to be talking about the story of a painter to startup founder. That's the story of Sunil, which we will be discussing today. And after he presents his story, then we have a short Q&A. With that brief introduction, let me now come out of my presentation and then request Sunil to take over. I'll stop the share and hand over to Sunil to take over and then tell us your story of transitioning from painter to a startup founder. Sunil, over to you. And whenever you are ready, Okay. if you want, you can tell me. I'll share the screen and share the presentation or the video as discussed. Please go on. Thank you very much, Dinkarji. First of all, thank you for inviting me here, and thanks to all the friends, new friends I can see on my screen. So, Ajit ji, Heman ji, Sagar, Supriya. So, all of you, thank you very much. Dinkarji, I will need you, so don't go away anywhere. I will need you. So, basically, this is my first this kind of presentation about the product. As he said, Keep Painter converted into startup business. So 1988, I passed out from art school. I used to paint, and मेरे painting के exhibitions हो गए थे in Jahangir, in Pune, then some abroad, and the show painting भेजा. So painting करते करते actually शुरुआत I used to do some illustration work for the local newspaper here in Pune when I got passed out. इंडियन एक्सप्रेस वाज द पेपर देन यहाँ पे सकाल करके सबसे बड़ा मराठी न्यूज़पेपर है आई यूज्ड टू ड्रॉ illustration for them. That is how I started my bread and butter. Then I designed some poster jackets. Then so many आज जो भी आता गया मैं करता गया. And finally my first love was oil on canvas. I used to paint. The paintings was my first love, my passion, whatever you said at that time. It was I used to paint. So more than 10 years I did that full time. After that I thought कि I must do something else more than this. And मुझे लगा कि whatever knowledge or creativity, whatever I have, I will put it in, for a better cause. And the environment was my love. I found that then it was not my second love, it was my first love, the environment. So I draw one character while sitting in my studio. Take simple सा plant, if it is there, now most of the place are barren land. और वो प्लांट अगर यहाँ से आता है शहर में तो वो आते आते वो क्या देखेगा
and this is how the greeny journey started. So Dinkarji, I will request you, can you play a animation film, Yeah, I'm just doing that. the Give me a second. garbage throwing wala? Yeah, I'm just doing that. It's a 1 minute video. Yeah, there you go. No, not this one. This one, right? This is the first one. No, this first one. Yeah. Can I play This this? we will show it last. Okay, which one you want me to play? The garbage throwing, the list आपको मैंने जो Is the, this one? Yes, yes. Okay. पूरा screen नहीं दिख रहा है. समझ आवाज आ रहा है. Okay, Dinkar ji. Yeah. I was not able to see the entire screen. Huh? Meet the Axie home composter. I'm here to show you how easy it is to use our composter. And all it takes is just 3 steps. So let's get started. First, open the lid of your composter. Let me just start once again. I think, I don't know, the problem could be... नहीं ठीक है. Let's hold it. बाकी लोगों को पता नहीं कैसा दिखा. The problem could be with the video. Just hold on one second, please. We'll just do that once again. Okay. We were able to see the video. Yeah, but then Okay. you could not see the Okay. full video. So let us see if it works out. Let's try then another video. The second one. What is this here? Why is this coming all? वो शुरू में एकदम करेक्ट हुआ. Exit full screen. Okay, so I'll play it in the same format. You can see this now. Okay, super. Yeah, what do you, Samuthy? Okay. Hi. No. Let's hold the video now. Yeah. Let's go for presentation. Yeah. So what I was telling you all, that I created this character Greeny, and then we started work with this Greeny one. Basically, environment का awareness करना चाहिए. Everybody should know, because whatever work I done with environmental experts, I realize most of the time they go with statistics. वो फिगर देते रहते हैं, इतना परसेंट से ये होता है, उतने परसेंट से होता है. तो आई वाज नॉट एबल टू विजुअलाइज. तो आई थॉट कि एक विजुअलाइज करने
and बच्चों के लिए भी easy हो. That is why I started creating this 1-minute film. MTDC, that is Maharashtra Tourism Development Corporation, like this idea very much, and they used it for responsible tourism. I made almost 15-16 films for them. Some of them 60 seconds and then some 20%. Later, while doing this work, I realized one has to go on the ground because making film doesn't help much. There are so much content already, and I'm just creating some more content. So I thought we will go on a ground and work. So यहाँ पुणे के पास एक village है called Alandi. It's a pilgrimage यहाँ पे, and then we worked there for 1 year. I created a team and we focused only on the solid waste management part because environment itself is a very big canvas. Very big canvas. I felt that you get lost into it. There's so many subjects, so many topics, so many problems. So what to do, where to do, how to start. Then I focused only on solid waste management and गांव में जो कचरा होता था उस कचरे का क्या होगा, उसका क्या होता है. जो नदी है हमें हमेशा वो it's always on the river bank. तो ज्यादा कचरा होता है तो भी वो नदी में जाता है, बारिश आती है जोर सी तो भी वो नदी में ही जाता है. और जो म्यूनिसिपल काउंसिल के लोग हैं वो भी रात को उसको नदी में ही पुश करते हैं अगर जगह कम करा. So this was the normal state. Then we realized कि segregation is very key part in this. तो segregation के लिए क्या किया जाए? Then we started a campaign called Swachhagraha. Gandhi ji did Satyagraha, so we coined a word Swachhata plus Agraha. So that is why it is Swachhagraha. And 2013, I started this service as a Swachhagraha to make a campaign and make people aware about it. So this video helped me in that. So more people asked me to make video also, and then actually groundwork kiya. Shirdi people like this idea very much, and they invited us. What you have done for Alandi, do it for us. We will pay you for this. And this is how the business model started. So revenue model मिल गया हमको कि we were giving our service to the entire municipal council, and then we got next village and next village. So in Shirdi, I remember very well, within a year हमने जो इंटरव्यूज किए, जो डेटा किया था, कितना सेग्रीगेशन होता है, कितने घर है, कितने पॉकेट्स है, गाड़ी कहाँ से जाएगा, कहाँ निकलेगा, हाउ मेनी हाउसेज वन व्हीकल विल कवर, सो एंड सो फॉर. तो ये करते करते देन मैंने रियलाइज कि वहाँ पे जो स्क्रैप डीलर है उनका बाइंग बढ़ गया था बिकॉज ऑफ सेग्रीगेशन. 3 से 3.5 टन पर डे उनका बाइंग बढ़ गया है. तो जो 20-25 थे वो सब हमको रिपोर्ट करते थे, हम उनके पास जाते थे. सो विद इन अ ईयर हमने देखा 49% डंपिंग कम हो गया. इसमें इंपॉर्टेंट होता है कि व्हेन यू वर्क विद द म्युनिसिपल काउंसिल, यू आर वर्किंग विद द गवर्नमेंट पीपल, यू आर वर्किंग विद द लोकल गवर्निंग बॉडी. सो देयर इज अ पॉलिटिक्स, देयर आर इश्यूज, देयर आर करप्शन, देयर आर रेस्ट ऑफ इट जो भी एक म्युनिसिपल काउंसिल के साथ होता है. सो that was more difficult us to learn. While doing this for 10 years, then I thought कि this has to be in a bigger business. There are opportunities, and सर वो स्लाइड आगे आगे जा रहा है. हाँ, let's go to Greeny first. Okay. Okay. So then I realized कि इसमें कुछ हो सकता है, इसमें कुछ प्रोडक्ट निकल सकता है. और जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू हमने टैकल किया, देयर आर 2-3 इश्यूज, बट द फर्स्ट इशू कि हर घर में कचरा सेग्रीगेट होना चाहिए, दैट फर्स्ट थिंग. देन द गार्बेज इज एक्चुअली ट्रैवलिंग. मतलब पुणे में मेरे घर में जो गार्बेज बनता है, सपोज 1 किलो गार्बेज अगर मेरे घर में होता है तो 70% इज एक्चुअली वेट वेस्ट. और मेरे घर का जो कचरा है, ये कचरा नीचे जाता है, बिल्डिंग के वॉचमैन के पास जाता है, वहां से घंटा गाड़ी में जाता है, उसके बाद एक ट्रक में जाता है, फिर वार्ड ऑफिस में जाता है, और फिर वहां से वो दैट प्रोसेसिंग सेंटर या ग्राउंड या डंपिंग ग्राउंड जो है कुरसुंगी करके वहां पे जाता है. सो एवरी डे द गार्बेज इज ट्रैवलिंग ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर. Then we realized कि home composting is a good idea, so why not focus on that. And then last year, actually last night 2022 में हमने एक प्रोडक्ट किया और उस पर कुछ R&D के, तो 1 साल रिगरस ट्रायल लिया उसके.
Then 23 के September उसके पहले May June में we launched it in a very soft manner. So I will just go to the business part and the product what we have done. ठीक है? Yeah. I think so anybody can stop me. So I'm just going brief with the first few slides. We will just focus on 4 or 5 slides more, whatever you say. So basically, growth is happening everywhere, and the dark side of the growth is this. This garbage, people, the object, the birds who are flying are not safe. The water, inside water, the animals are, the fishes are not safe. So flying is not safe, underwater not safe, on land not safe. So nobody is safe. This kind of scenario is going on. Dinakar ji, can you go to the next slide? Yeah. So future, next. Sustainability में there are sustainable development goals, as all of you know, must be knowing कि there are United Nations की जो गोल है 2030 के, we try to do our work aligned to that goals, and in this project we are very much aligned to the 6 number, 11 number and 12 number. Okay. Just go to next. This is our vision to provide education, training, technology solution for a better world. The mission is important. Use environment-friendly method to reduce the dumping of solid waste. So मैंने सोचा कि इस पे एक पॉइंट पे भी फोकस किया जाए तो भी बहुत काम. Next. So this is brief introduction of Greeny. The company started in 2012. In 2013 we started this Swachhagram. Then you can see a mobile hand. There's a Greeny the Great written there. Basically we have created a game app where children can play and learn the segregation. Very good. Now I will share the link with you all. You can play and see. Yeah. Next. So this is again the 14-15 municipal council I work with in this last 10 years. So Shirdi is one of them, Karan, Bhor and Saswad and blah blah blah. आपको यहाँ के नाम पता नहीं होंगे तो आपको कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा गाँव कहाँ पे है. So let's keep it. But government के साथ काम करने का was the experience. And then as I said, I was explaining you, Greeny launched this product called, we call it Axi. तो नाम लिखा था पहले अक्षय, तो अक्षय का मेरा बेटा है वो अभी he is working with me, sir, and then he said it's not no Akshay, it's Axi, it has to be trendy name. So Axi, and it is recycling. So there's a arrows you can see around the X. The home composter, which converts kitchen waste into excellent organic manure. Then we found this, regenerate the value, the hashtag, some of the hashtag, do it yourself or save soil. So features are our product is basically 100% recyclable material. Garbage processing में wet waste के लिए there are two methods. One is aerobic, one is anaerobic. Anaerobic is basically biogas. Aerobic में जो aeration बहुत जरूरी है. So there are standard method which we used to use कि गांव में कचरा डालो तो कुछ नहीं होता था, लेकिन उसको एरिएशन मिलता था, हमको पता नहीं. नदी यहाँ से वहां बहती है लेकिन नेक्स्ट गांव में वो उतना पोल्यूशन नहीं करती है अगर बीच में 9 कोस से ज्यादा डिस्टेंस है, क्योंकि उसमें पानी बहता है तो एरिएशन ही होता है. तो दैट मेक्स द रिवर क्लीन. अभी पोल्यूशन का परसेंटेज ज्यादा है तो वो बात छोड़ दो, लेकिन नॉर्मली दिस इज द नेचुरल प्रोसेस. सो एरिएशन में इसलिए हमने वो किया. सेकंड थिंग जो मटेरियल चूज किया, प्लास्टिक तो सबसे पहले ऑप्शन था कि एरोबिक में क्या होता है कि देयर आर टू मेथड, वन इज स्टैटिक मेथड, वन इज टम्बलिंग मेथड. स्टैटिक में हम लोग घर में एक अपने सबसे फेमस तो बेंगलोर का ही प्रोडक्ट है डेली डम का. उसमें आप लेयर पे लेयर करते हो और हर लेयर में वो ठीक से होना चाहिए. प्रॉब्लम ये है कि गड़बड़ हो गया तो समझता नहीं है, और जिसको समझता है वो घर में जो एक्सपर्ट है वही होता है. तो घर का एक ही बंदा उसको कर सकता है. यहाँ पे इसमें इजी है. व्हेन यू रोटेट, नीचे का कचरा ऊपर का नीचे हो जाता है, मिक्स होता है. बायोकल्चर जो बैक्टीरिया वो मिक्स होता है, जिसको मिक्स करना पड़ता है, एंड एरिएशन होता है अपने आप. तो दिस इज नॉट अ सिंपल science behind it. So 100% recyclable material we chose for it. We started with plastic. We use this FRP wala model, then 6-side aeration, 2-side flows, and then we finalize the 2-side aeration and 6-side flows and all that.
So basically no electricity required because people keep it in normally terrace or balcony or in a garden. Okay. So value proposition is basically family को self reliance हो जाता. तो आपके घर का कचरा अगर जो वेट वेस्ट है जिससे स्मेल आता है, जिससे बैड ऑडर आता है, जिससे एक्चुअली इन्फेक्शन हो सकता है, दैट इज द वेट वेस्ट. नो डाउट 8 दिन आप वेट वेस्ट करोगे तो उसको नेचर अपने आप उसको क्योर करता है और ड्राई वेस्ट को नहीं करता. लेकिन सिटी में बड़ा प्रॉब्लम वेट वेस्ट का हो जाता है बिकॉज पीपल देन थ्रो ऑन द रोड एंड द वर्स्ट पार्ट इज दे पुट इट इन अ प्लास्टिक बैग एंड देन दैट ब्लैक बैग दे थ्रो इट ऑन द रोड. दैट इज द प्रॉब्लम. सो जीरो ट्रैवल हो जाता है उसमें. जो सेंट्रलाइज सिस्टम है उसका भी अपना लोड है, उनकी भी अपनी प्रॉब्लम है म्युनिसिपल काउंसिल के. कितनी गाड़ी, कितने लोग कैसे ट्रैवल करेंगे, कब जाएंगे, एक ड्राइवर भी नहीं आता है या दारू पी के पड़ता है तो प्रॉब्लम हो जाता है. तो वहां का सिस्टम बिगड़ जाता है 2 दिन के लिए. तो ऑर्गेनिक मैन्योर हर घर में मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स है उसमें क्योंकि आपके घर का बना है तो ऑर्गेनिक है, उसमें कोई केमिकल्स नहीं है, आपके घर के खाने से, बच्चे खाने से वो बना है. एंड जब हमने उसका ट्रायल लिया तो पीपल यूज्ड टू फील नाइस, द सेंस ऑफ प्राइड है उसमें कि अरे मेरा कचरा मैनेज कर रहा हूं. Now it's a percentage like 1% people think about it carefully. I am taking responsibility of my own garbage. लेकिन दूसरा जो हमने ढूंढा कि this is difficult also. You know, only expert can do that composting part. Layman cannot do. So this makes very easy. Our product you anybody know. My father is like 93-year-old. He can also operate. My wife is 45-year-old. She is operate. My son is 18-year-old. वो भी करता है. So 5-6 साल के बच्चे के ऊपर कोई भी इसको ऑपरेट कर सकता है, कोई ज्यादा ये नहीं है. इसमें एक और इम्पोर्टेंट है कि फैमिली सेल्फ रिलायंट हो जाती है. दूसरा है कि सेल्फ जो सॉलिड वेस्ट के जो वर्कर्स है उनका काम मैंने देखा है, बहुत क्लोजली देखा है. एक बिल्डिंग में 50 फ्लैट है. सपोज दे आर कलेक्टिंग गार्बेज फ्रॉम ईच फ्लैट, देन 1 किलो गार्बेज अगर एक फ्लैट से कलेक्ट किया तो 50 किलो हो जाता है, वो नीचे आ गया. 50 किलो का बीन वो उठा ही नहीं सकता है तो उसको खींचता लेके जाता है. अब वो खींचेगा तो उसको क्रैक हो जाएंगे, तो 2 साल में वो बड़ा बीन भी फेंकना पड़ता है प्लास्टिक का, फिर नया बीन लाओ. तो ऑल दी स्मॉल इश्यूज, और वो वैसे भी थक जाते हैं. अगर वेट वेस्ट हर घर में मैनेज होता है तो ही जस्ट हैव टू कलेक्ट ओनली 15 किलो हर घर से 300 ग्राम्स इनटू 50 हाउसेस. सो 15 किलो अगर वो नीचे आता है तो ही कैन पिक द, उठा सकता है वो उसको बीन को. तो ये हमने देखा उनका अर्निंग बढ़ता है बिकॉज दे गेट मोर क्लीन ड्राई वेस्ट. अभी उनका प्रॉब्लम है कि उनको क्लीन नहीं मिलता है, मिक्स मिलता है. बेंगलोर में तो बहुत ज्यादा अवेयरनेस है, पुणे में भी है, उतना बाकी इसमें नहीं है. बाकी गाँव में जैसे मैं नासिक में गया या अहमदनगर गया या यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो सिटीज है टियर 2 से टियर 3 में तो नहीं है. तो उनका भी ये कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है. और अपने आप अगर घर में कंपोस्टिंग होता है तो सेग्रीगेशन का क्वालिटी एकदम बढ़ जाता है. पीपल केयरफुल अबाउट इट. कम्युनिटी एज अ सोसाइटी, हम जो टैक्स पे करते हैं उसी से तो उसका डीजल आता है. और ट्रांसपोर्ट के जो गार्बेज कलेक्शन व्हीकल है वो रोड पे जाते हैं तो उसका जो स्मेल आता है वो हमको ही आता है. उसका जो डीजल जलता है उसका पैसा भी हम ही देते हैं. सो वो प्रॉब्लम एक सॉल्व होता है. एंड देन इन्वायरमेंट का तो कोई ये ही नहीं. तो लेट्स गो टू नेक्स्ट. अप टिल नाउ अभी हम तक हमने क्या किया, ऑनलाइन सेलिंग शुरू किया है, डिस्प्ले और डेमोन्स्ट्रेशन हम लोग कर रहे हैं. तो 2-3 शॉप्स में यहाँ पे रखा है. अभी छोटे स्केल पे लाइक 200 प्लस कंपोस्टर वी हैव ऑलरेडी सोल्ड. नाउ दिस ईयर वी विल जंप नेक्स्ट. तो दीज आर सम ऑफ द फोटोज आई एम शेयरिंग विथ यू ऑल. ये एक यहाँ पे पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का प्रोग्राम है जिसमें प्रोडक्ट डिस्प्ले करने के लिए बोला था. सो ऑल दोस the people who are watching, they are all officers of municipal corporation. The 350 or some 400 officers are there in the same theater. राइट साइड में जो है वो जो गार्बेज कंपोस्ट बनाता है उसका टेस्टिंग करके लिया था, वो टेस्टिंग का रिपोर्ट है. नेक्स्ट. ये these are user, you can see some government people, individual है, बहुत ही ओल्ड लेडी है. नेक्स्ट.
कि कुछ ऑफिस में आते हैं, उनको हम लोग डेमो भी देते हैं, फिर कोई प्लान देते हैं, फिर कोई घर पे बुलाता है डेमो के लिए, फिर फॉर बाइंग, ऐसे शुरू हो गया है। तो अभी वो उसका बढ़ रहा है धीरे धीरे। नेक्स्ट, एक पॉलिटिशियन है यहाँ की। नेक्स्ट, वो कुछ शरद पवार का इंस्टीट्यूट। बेटी है ना वो? अरे वाह दिनकर जी, हाँ। ग्रेट। आई वाज सरप्राइज, आई एम सरप्राइज बिकॉज वहां तक लोगों को उनको जानते हैं एनीवे। तो ये इंस्टीट्यूट है, क्या है नाम सर? इंश्योरेंस अकेडमी, हाँ, नेशनल इंश्योरेंस अकेडमी, एनआई। यहाँ पे यू कैन सी पीपल वो पुटिंग इन स्मॉल बालकनी, बगल के कम कैंपस में रखते हैं। हमारा विजन है कि वो धीरे धीरे उसने किचन में रखना चाहिए। विजन ये है कि हर घर में एक किचन में एक डस्टबिन होता है, उस डस्टबिन को रिप्लेस करना चाहिए, बिकॉज डस्टबिन इज लाइक अ कॉमा, whereas composter is a full stop. So this you can see, हम लोग जहां जाते हैं डेमो देते हैं। नेक्स्ट, ये सब ऑफिसर्स एग्जीबिशन में डिस्प्ले करते हैं। दिस इज इनसाइड, यू कैन सी जहां पे कुछ फ्लावर उसने डाले हैं। अभी तो हम एक नया मॉडल डेवलप कर रहे हैं ओनली फॉर द पूजा के फूल। जो निर्माल्य है उसके लिए एक छोटा 18 लीटर कैपेसिटी का कंपोस्टर डेवलप कर रहे हैं। 2-3 दिन में उसका प्रोटोटाइप बन जाएगा। देन वी आर प्लानिंग टू मेक अ कैंपेन अबाउट इट। लोगों को वो लगता है कि कचरे में हाथ नहीं डालेंगे, वो नदी में डाला तो नदी पोल्यूशन होता है, और कचरे में डालने को उनका दिल नहीं करता है। तो जो इमोशन है उसके लिए वो काम आएगा, और बहुत लोग मांग रहे हैं। नेक्स्ट, तो बेसिकली जो हमने ट्रायल लिए मोर देन 100। हाँ, FAQ जो आ रहे थे, आई विल डिस्कस सम FAQ। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हाउ मच गार्बेज इट विल टेक। तो 22 to 24 या 25 kg वो लेता है। इट्स कैपेसिटी 30 लीटर, बट आप कचरा डालते हो, दूसरा दिन डालते हो, फिर रोटेट करते हो, तीसरे दिन डालते हो, रोटेट करते हो। आई कैलकुलेटेड इट कि एक हमारे घर में एक एग्जैक्ट 30 डेज में जब 20 kg इनपुट था जो लिख के रखा था, वो जब निकाल के देखा तो 5 किलो था। तो 75% रिडक्शन होता है। फर्स्ट 10 डेज का बहुत बढ़िया बनता है, और जो लास्ट 10 डेज है उसका जो परसेंटेज है रिडक्शन का वो कम होता है। तो विल इट स्मेल? नो। हम बोलते हैं कि स्मेल आया तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। किसी भी चीज का स्मेल आया तो इसका मतलब कुछ तो खराब। सेम थिंग मैगेट्स, वाटर कंटेंट हाई हो जाता है स्पेशली रेनी सीजन में, तो मैगेट्स हो जाते हैं, हो सकते हैं। तो इफ यू ऐड सम ड्राई मटेरियल लाइक कोकोपीट और कोई भी अपना लकड़ी का डस्ट, भूसा का क्या बोलते हैं, सही बोलते हैं, वुड का डस्ट, वुड कटिंग करते हो, वो थोड़ा डाला तो वो पानी सोख कर लेता है और वो खत्म हो जाता है। सो बेसिकली ये FAQ हमने क्लियरली एज अ बिजनेस जाने के लिए वो एकदम क्लियरली हम लोग गए, एंड दिस इज द मटेरियल वी स्टार्टेड फॉर कम्युनिकेशन। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर इन मराठी, सो आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल कैन रीड मराठी हियर, बट यू कैन मेक आउट। So the first poster, when we designed it, then later we realized कि this is our vision। कि वो लेडी बोलती है कि घर में मैंने टीवी लिया है, फैन लिया है, कूलर लिया है, जूसर लिया है, मिक्सर लिया, अब कंपोस्टर लूंगी। तो इस तरह से जाना चाहिए आगे। ये प्राइसिंग है 3500 फॉर द माइल्ड स्टील का जो वर्जन है, एंड 7500 फॉर द स्टेनलेस स्टील का वर्जन। अभी हमने इसको वो क्या अमेज़न पे नहीं डाला है, बट दिस इज इट। दिनकर जी, कैन यू शो दैट एनिमेशन फिल्म? Yeah, which one you tell me? Now The this I'll close it. introduction, I'll close this. Which animation film? ये वाला? ये वाला एनिमेशन ग्रीनी जो फर्स्ट आपके स्क्रीन पे लेफ्ट में दिख रहा है ऊपर, ये वाला है। So we are using this character to promote the product. Please have a look. 45 seconds. Yes.
Yes. Thank you. Okay. And any Again, of these we can videos you go- want to see? No. Again, we can go back to the PPT. To the PPT you want, is it? Okay. अच्छा सॉरी आपने वो क्लोज कर दिया. There are 3-4 slides left, I think. मैं उसको 1 minute. यहाँ पे थे हम लोग Samuthána. So हाँ. this is what the total addressable market we are working. We work on the business plan part. See, this business is completely new thing for me. आपको मैंने फोन पे बोला था ना, when I saw your chit chat, अरे this is good idea. I said कि let's meet these people who are product का scalability is different thing. उसका making execution is a really task. But the communication I found very easy because अभी तक जो काम किया था environment के लिए तो communication हमारे लिए easy हो गया. But this is what the Samuthána जो and this is competitive analysis की कौन से प्रोडक्ट है. देयर इज अ खंबा, देयर इज अ डेली डम का जो ये है, इसमें बेसिकली यू कैन सी दिस इज अ स्टैटिक थिंग. अदर टू आर एक तो मेरे ख्याल से कुछ डॉलर में है, वो कोई फॉरेन का है. यहाँ पे ग्रीन लाइफ का है. देयर आर 10-15 कंपनीज हु आर मेकिंग दिस डिफरेंट प्रोडक्ट्स. बेंगलोर में भी है, पुणे में भी है, दिल्ली में है. ओके. सो चैलेंजेस में एक है कि ये अगर आगे जाता है, अगर पुणे में 12 लाख घर है और हर घर में कंपोस्टर लगता है, जैसे उनके घर में एक नॉर्मल चीज टॉयलेट है या फैन है या जैसे वैसे कंपोस्ट लगता है, तो 700 ग्राम इनटू 12 लाख हाउसेस, दैट बिकम्स लाइक 140 टन. 140 मेट्रिक टन गार्बेज ट्रैवल ही नहीं करेगा, क्योंकि अभी तक ये ट्रैवल किया है. पिछले 20 सालों में शहर इतना बढ़ गया है, आगे कितने साल ट्रैवल करेगा पता नहीं. तो वहां कहीं तो उसको स्टॉप लग सकता है. बट कंपोस्टिंग नीड्स अ स्लाइटली पर्सनल केयर, जो हमने बहुत उसको मिनिमाइज किया है. सेग्रीगेशन अभी भी हैबिचुअल नहीं है सोसाइटी में, एक प्रॉब्लम है. और लैक ऑफ जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उनको लगता है कि यार मैंने कचरा किया, मैं बाहर रख दिया, कॉर्पोरेशन का जिम्मेदार. इफ आई थ्रो इट ऑन द रोड, कॉर्पोरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट एंड नॉट मी. ये नॉर्मली एटीट्यूड है, दैट इज द प्रॉब्लम. वर्किंग कैपिटल जो हम लोग फेस कर रहे हैं, बिकॉज यू कैन नॉट जंप हाई. That's true. Yeah, so I'll just unshare this. So this is it. Yeah, thank you so much, Sunil ji. It was very, very inspiring. A great journey, a lot of commitment. मैं अभी ये पूछूंगा, सब हाँ. जो भी प्रश्न है सब पूछ सकते हैं. पूछने के लिए थोड़ा हाथ उठाइए और पूछ सकते हैं. मैं पूछना चाहता हूँ, देखिए आपका जो भी मकसद है, वॉट एवर योर गोल is mainly to make sure that the environment is protected and we improve the handling of garbage. Why is it that you are focusing on making a product instead of bringing awareness? क्योंकि आज सोसाइटी में अवेयरनेस का प्रॉब्लम ज्यादा है, प्रोडक्ट का नहीं है. क्यों आप प्रोडक्ट करना चाहते हो? बिकॉज यू आर अ पेंटर, यू आर एन आर्टिस्ट, आपने वीडियो किया, वो सब इस्तेमाल करके आपका नॉलेज उधर है. तो व्हाई इज इट दैट यू कांट फोकस मोर ऑन ब्रिंगिंग इन अवेयरनेस? जैसा आपने उधर कम्युनिटी के साथ काम किया, जिधर भी काम किया, ये प्रोडक्ट आइडिया आप किसी को देख सकते हैं, दे सकते हो ना, वो कर सकते हैं प्रोडक्ट, यदि आपने. नहीं, गुड क्वेश्चन. सबसे इम्पोर्टेंट बात, व्हेन आई वर्क फॉर अवेयरनेस ऑलमोस्ट फॉर 10 years, और मेरा जो कम्युनिकेशन का जो भी नॉलेज था, स्किल था, उसमें पहला जो होता है हम लोग उसको IEC बोलते हैं, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन. दिस इज हाउ गवर्नमेंट डील्स विद व्हाटएवर गवर्नमेंट स्कीम, यू नो, बिकॉज ऑफ दैट IEC.
उनका जो पब्लिसिटी डिपार्टमेंट होता है वो पब्लिश करता है, सो दैट उनका एक हेड है, उसके अंडर उसका बजट होता है। आईसी अब पुराना हो गया है, मतलब बस स्टैंड पे उतरो और सामने देखो कि 2 बच्चे चाहिए, 3 बच्चे नहीं चाहिए, तो अवेयरनेस उनके लिए खत्म हो गया। नाउ लास्ट 10 years we worked on BCC, बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन। ऐसा कम्युनिकेशन जिससे वो बिहेवियर चेंज हो। अब बिहेवियर चेंज होने के लिए क्या होता है, आज भी एनीबडी एनी सेंसिबल पीपल विल से कि अरे अगर मैं बाहर जाऊं और कचरा डालने के लिए कोई डस्टबिन नहीं है तो मैं कहाँ करूं, मैं क्या करूंगा, मैं तो फेंक ही दूंगा। इफ आई एम बाइंग माई बॉटल, एम्प्टी बॉटल ऑफ वाटर, अगर मैं देखूंगा यहाँ वहाँ जगह नहीं है तो मतलब इफ देयर इज नॉट डस्टबिन आई विल थ्रो। अब इससे क्या होता है कि बिहेवियर में चेंज करने के लिए सिस्टम बैठना चाहिए। अब सिस्टम नहीं, इसलिए आप बिहेवियर को चेंज ब्लेम करते हैं, और जिनको जो जिनका बिहेवियर है वो सिस्टम को ब्लेम करते हैं। तो ये ब्लेम गेम चलता रहता है सोसाइटी में। दिस इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व इन दिस 14-15 म्युनिसिपल काउंसिल। देन आई थॉट कि एक स्नेक डॉट जो है आगे, अगर टेक्नोलॉजी के इसके साथ कनेक्ट कर दिया जाए, अगर थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग हो जाए कि नगर पालिका अपना काम कर रही है, मैं भी थोड़ा सा मेरा करूँ, तो मेरा करने के लिए कैन आई स्पेयर 45 seconds? So we thought कि this idea has to be in a very easy product. मतलब I will be very happy to design a home composter which looks like a washing machine. So people feel proud कि अरे हमारे घर में वॉशिंग मशीन, वो यूज नहीं करता है। ऐसे बहुत सारे छोटे मशीन होते हैं घर में, वो यूज नहीं करता, फिर वो प्राउडली रखता है। हम लोग पूरन पोली खाते हैं, उसके लिए एक आजकल मशीन आता है, आजकल मतलब वो भी पुराना हो गया, वो साल में 1 या 2 बार यूज होता है, लेकिन मशीन खरीदते हैं और रखते हैं। तो मैंने सोचा कि लेट्स गो इनटू द प्रोडक्ट और इसको ट्रायल करते हैं, इसलिए लास्ट ईयर 2023 मई जून में ट्रायल लिया और रिस्पॉन्स हमारे एक्सपेक्टेशन से भी अच्छा। तो अभी उसका प्रोडक्ट का कम्युनिकेशन कैसे होगा, वो प्रोडक्शन कैसे होगा, एज यू सेड कि एनीबडी दूसरा भी कोई कर सकता था, मुझे कोई मिला नहीं, अदरवाइज मैं उसको आइडिया देता कि यार तुम ये करो, हम लोग अपना काम करते। लेकिन वो मुझे लिमिट लगा, अवेयरनेस का एक लिमिट है। तो पीपल से व्हेनेवर यू एक्सप्लेन टू देम, नोबडी विल से नो टू यू। अगर आप किसी घर में जाओ और बोलो कचरे का ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तुमको सेग्रीगेशन करना चाहिए, वो तुमको मना करेगा ही नहीं। इतना अवेयरनेस अभी हो गया है कि दे विल नॉट से कि जस्ट गो अवे, यू डोंट डिस्टर्ब मी, ऐसा नहीं होता। दे विल से यस यस इट्स वेरी गुड, यू आर एब्सोल्युटली राइट, पर वो एक्शन में नहीं आता। जब तक उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा वो एक्शन में नहीं आता। हाँ, तो मैं इधर दो चीज सोच रहा हूँ। मैं आपको प्रश्न पूछूंगा, बाद में आप आपका जो भी आइडिया है वो बताइए। पहला ये कि देर आर लॉट ऑफ सच केसेस वेयर देर आर लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स हु आर वर्किंग इन द सेम स्पेस। हमारा सिट कम्युनिटी में भी है जो दूसरा कंपनी है जो ऐसा कभी कभी प्रोडक्ट बनाता है। देर आर अदर्स हु आर वर्किंग विद ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ओनली फॉर सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स। ऐसा बहुत बहुत मेंबर्स है सिट में। सिट के बाहर भी दुनिया में बहुत बहुत मेंबर्स है जिसके पास कैपेसिटी है ऐसा सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। मगर द बिगेस्ट चैलेंज इज द कल्चर एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ दैट इन द सोसाइटी। तो मैं अभी हमारा सिट चैट में और एक बहुत बढ़िया आदमी है अजीत कैकिनी नाम के। मुझे पता नहीं यदि आपको अजीत साहब मालूम है, मैं मिला है नहीं मिला है। उन्होंने अभी 40 साल में बहुत लोगों का बिहेवियर चेंज किया है 40 सालों में। तो यदि आप मैं सिर्फ सोच रहा हूं, दो दो चीज बोलना चाहता हूं। पहले, यदि आप और अजीत मिलके आपका इलिस्ट्रेशन जो है, जो कॉम्पिटेंस है, वो इलिस्ट्रेशन और अजीत का तो सोच का कॉम्पिटेंस है, क्या बताना है, वो यदि हमने विजुअलाइज किया, विजुअलाइज करने के फिल्म करने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया, और ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए बजट चाहिए हमको, बिकॉज एनिमेशन के लिए बजट चाहिए और ये पूरा काम करने के लिए भी वक्त लगता है, तो इसलिए पैसा चाहिए। तो यदि हमने एक प्रोजेक्ट ऐसा बनाया, बनाने के बाद हमारा सिट कम्युनिटी में ऐसे जो भी सोसाइटी का मुद्दा है, सोशल इंटरप्राइज का मुद्दा है, इसके बारे में आपका एक्सपीरियंस, अजीत के एक्सपीरियंस मिला के यदि हमने बताया कि ऐसा प्रोजेक्ट बनाएंगे, क्योंकि ये प्रोजेक्ट से हमने कम्युनिकेशन करेंगे कि सोसाइटी का सोच बदले। ये प्रोजेक्ट के लिए यदि हमने फंड रेजिंग किया सिट कम्युनिटी के अंदर, अमर जी आपका ख्याल क्या है, कंट्रीब्यूटर्स होगा क्या सिट कम्युनिटी के अंदर, बाहर नहीं?
नहीं What होगा pro- sir. There will be people to join or fund this project, because what the very important point that Sunilji was talking, which I was listening to him, he says that transportation of so much of garbage is a big pollution and cause of environmental to the air for us, for our life. I think so. People, as you said, what you said was very correct. We should bring in an awareness. He has said that IEC has been done. IEC has been done. But still, I feel people of late have been very cautious and serious on environment issues. And they are, the next generation is taking a big leap on this. Even in Karnataka, I feel where we stay, you and I stay, waste segregation is a must. Hmm. Even the contractor, when he comes, his person comes to pick up. It's with a pinch of salt, because one side waste segregation is a must, but that BBMP fellow who is having a contractor who is doing waste segregation, his business will go down if you give it separately. Yeah, I So- was coming to that point. So there is a mafia there. So these guys, they collect Sir, it, mix it. one of my friends came from Canada. They told we'll produce electricity from waste, what you are dumping here. And we'll put the project right in the heart of the city without any pollution. They are already having it in Canada. Government didn't give permission. They told, no, we'll not give you. So there is a mafia that is running on this. I don't know how Sunil has a solution for this, how to resolve this. Yeah. But Well, I'm sure people will be there in the SIT community, because this is an environmental based subject and very dear to everyone. And I'm sure there will be people So to it come can be, forward for even this. if it is crowdfunding, we are not talking about 1,000 members are there. Even if every member contribute 1,000 rupees, we're talking about 10 lakh rupees. Yeah. It's not a small amount. Ajit ji, what is your take on this ability to change the behavior of people? What he was telling See, in terms of... Dinakar, as Sunil was talking, I was fascinated because firstly, look at his name, Sunil. Sunil means darkness. Sunil means Krishna. There is depth in it. And the beauty is he has brought in art as a source, converted into a craft. A craft which is bringing science with aerobic and anaerobic. Then is bringing physics of static and tumbling. Then is bringing in biotechnology and bioculture. Then is bringing in geography of value proposition. Then is bringing the value of responsibility. If every child in a school pays 10 rupees and studies all these subjects, you know what can be done? What 10 lakh rupees? 10 crores will come. Very true, very true. Well said. No, but Ajit, that is one part of it. Now I'm talking about, he spoke about his challenge of not being able to get people to change the behavior in societies, right? It is because Chanakya said start from the side of the chapati. He has started from the middle of the chapati. What do you mean by that? Can you explain? See, Chanakya one day found somebody eating chapati from the middle. He said, don't do that. There is always trouble. Start from the side. If you start from the students, showing them how this is going to bring about a change in them, the family and the society, the support will be from the entire community. But if you straight away jump at the government, like what they said, electricity through bio-waste, there'll be 10 people objecting it. But when you start from the side of the chapati and involve the student by contributing 10 rupees, 10 crores will be connected, and they are putting into practicals all the subjects. I was fascinated. There is not one subject which is left here. From physics to responsibility to human endurance to everything. And make every child to start a garden on top of the terrace or around that, and you see what happens. Now, if suppose, let us say we consider that as an interesting project, how do we get that more structured so that we can then come back? To get it structured, have one principals meet and tell them how to create responsible citizens out of your students in this tumultuous times. How do we do that? By making them to do certain productive things which will bring down the mess and stress, which is the biggest EQ problem in our society today. Absolutely. Fair enough. Parents will support you, students will support you, everybody will support you. And like this, we reach the center of the government. Yeah, Sunil, you had something to add. Please go on.
No, I wanted to add something to Ajit ji. First of all, Ajit ji, very much thank you very much. कितना अच्छा आपने बोला मेरे लिए, I'm so happy, and because what he said actually it was very thoughtful. हाँ, ऐसा नहीं कि करते करते हो गया, कभी कभी होता है। आज में मैंने देखा है कि आई डिडंट थॉट अबाउट इट बट इट हैपेंड। ओके, यहाँ पे क्या था, बिकॉज ऑफ दिस 10 year एक्सपीरियंस ऑन द ग्राउंड ना, तो जो बिकॉज जो आपने जो बोला कि ऐसा एक प्रोजेक्ट करेंगे अवेयरनेस का, आपके क्वेश्चन का सीधा आंसर है कि यस, आई एम रेडी फॉर इट, आई एम रेडी टू वर्क विद अजीत जी, लेट्स ब्रिंग टुगेदर सम मोर पीपल। एंड व्हाट ही सेड कि 10 rupees from student instead of getting 1000 rupees from a grown up person who is difficult to convert but the young kids are more repairable version. So you Correct? yeah, so let us say आई एम रेडी। सेकंड थिंग, ये ऐसा नहीं होता है कि बच्चों को सिखाओ हो गया, बिकॉज व्हाट दे सी एंड व्हाट दे एक्चुअली ऑपरेट एट हाउस। जैसे स्कूल में हमने सिखाया कि वो सच बोलो, अब वो घर में जाके उसके घर में झूठ बोलते हैं तो ही इज कंफ्यूज। मैंने क्या किया, आज ही सेड करेक्टली कि सिस्टम से जाके टकराओ, इससे झगड़ा करो, वो करो, वो सब करके दे। अब मैंने देखा कि if we plan to make the solid waste management privatization, just think नहीं about नहीं it. नहीं, ये एक मिनट ठहरिए सुनील जी। जैसा अजित ने बताया, मुझे ये समझ में आया कि लेट अस से वी गो टू अ स्कूल, एंड स्कूल में आप बच्चों को ये जो आपने कंपोस्टर बनाया है, ये बनाने का एक प्रोजेक्ट दीजिए। हर एक खुद का एक कंपोस्टर बनाएगा, खुद का एक बना के घर लेके जाएगा। समझ में आ गया? खुद का एक बनाएगा तो वाई इज ही डूइंग इट? बिकॉज उसको कंपोस्ट करने में संतुष्टि है। तो खुद का बना के कोई प्रोड्यूस नहीं करेगा, हम सिर्फ मटेरियल सप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल, खुद का कंपोस्टर बनाया, खुद का जो पोस्टर बना के घर में लगाया, जो भी बना रहा है उसी का प्रोजेक्ट जैसा बना रहा है। दैट इज व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम अजीत। करेक्ट अजीत? फॉर दैट यू चार्ज सम माइनर मनी, इट विल नॉट बी दैट बिग अ प्रॉब्लम। वो करने से डेफिनेटली वो उसका ओनरशिप हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आइडिया करेक्ट है, आइडिया करेक्ट है, पर जब मैंने शुरू किया देन आई थॉट कि बच्चों के लिए मैं काम करूंगा, वो 20 साल के बाद वो इम्प्लीमेंट होगा, तो अभी तो मम्मी डैडी को छोड़ नहीं सकते। हाँ, नो व्हाट ही वाज टेलिंग वाज, और जो नहीं, हम ये सोच सकते हैं, बात कर सकते हैं। मैं ये समझा कि यदि हमने बच्चों से चालू किया तो बच्चे पेरेंट्स को इन्फ्लुएंस करेंगे और पेरेंट्स कोई दूसरे को इन्फ्लुएंस करेंगे। इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम द पेरेंट को सिखाने के लिए ज्यादा वक्त होता है, मगर पेरेंट जो भी है, बच्चों का जो भी आइडियाज है वो शायद आसानी से सुनता है, और their readiness to accept the child's idea is better than somebody third party's idea. तो वो खुद का हो जाएगा। That's a very interesting concept. पूना Yeah. में आई एम ट्राइंग कि अगर वो सिलेबस में ऐड होगा, वो प्रोजेक्ट बनेगा, ये होगा वो होगा, तब तक के लिए सपोज इफ आई गेट सम स्पॉन्सर एंड इफ आई पुट 100 मशीन इन 100 स्कूल्स जस्ट टू सी, और वो स्कूल के लिए ऑपरेट होगा, वो बच्चे खुद चलाएंगे, बच्चे खुद उसमें जो खाना टिफिन में आता है उसमें जो बचा है उसको कंपोस्ट करेंगे। इफ दे सी, इफ दे गेट द डायरेक्टली फीड, ऑटोमेटिकली दे विल टेल देयर पेरेंट्स कि वी वांट टू हैव वन कंपोस्टर। Yeah. So I नो understood. डाउट जो बनेगा घर में बनता है तो उतना फिनिश प्रोडक्ट नहीं होता है, तो फिर वो प्रयोग, एक्सपेरिमेंट, R&D ही रहता है। Understood. When No, you use every day, you need a finished product. no, I will basically try to organize a meet outside, some with some people who feel could be useful, could be helpful, and then after that we'll see if anything can be done. And then Yes. if we can make a simple project and then present this project to the SIT community itself, and then maybe see if somebody Sure. wants to fund it, and let us see how it works out. Hemant, you had a question. What was it? Your PDF was not visible, is it? Yeah, You are that point in unmute. time when you shared your screen, the PD was not clearly visible. I mean, that's what I just shared. Okay. Anybody have any other question? I only spoke. Namrata ji, what is you're also the sustainability lady, right? Any question from you? Any comment? Like, I agree with Ajit sir. Like, if you
try to change the children's, it's not changing. Actually, adults have a set mindset. It's difficult to change their mindset, but children are very impressionable. So what you say, these days, the schools there is a lot of projects which more than the kids do, parents have to get involved and do those projects. In such kind of, they do maths exhibition, science exhibition, EVS, all those kinds of things. There is a subject called environmental science. So in such kind of things, you can introduce this as a, as he said, as Sunil sir said that they are planning to put in school campuses. I think that will be a good start where children can get involved, and then as parents go there and see what is happening, they can also implement, because once they see, usually schools are a big place and there's a lot of garbage, wet waste coming in, where the kids could put their waste in the composter, and then if they use that same thing for the school gardens, when they see the garden flowering very nicely using the waste material, even the parents would get influenced. This is for the long run. I think looking at the results, many parents would buy into the product also. Very correct. Schools will be a big inspiration. Yeah. Sunilji, you wanted to say something. Go on, please. I am here because of you, but Manojji introduced me to you, and Kirti Chandak I can see here on screen. Yeah. So can Kirti share? I know all of you. This is a connecting point for me. Yeah, good evening. So I think the main challenge, I also am an artist and Pondicherry, and I'm part of a zero waste society. So the main challenge is influencing at the educational level. And for that, I realized we have also tried to do some work with schools around. So like one of my friends says, we have to find that one good officer somewhere. And there are always a few good people in government. And simultaneously, as citizens, because in the work we do, it's the same line as what Sunil Bhav is doing. So basically, the challenge is to convince people to do it. It's nothing to do with money, I realized. It's just about conviction. It has no money play. So, like he said, if someone sponsored 100 units, see, there are these Atal Bihari, studios and all that. There is sponsorship that comes and they're never attended. They're never used. So they will lie defunct, even if you get a sponsorship for 100 these things. So we really need more passionate people like him. We need more, it's like hands-on people to do it. So what I would like to request is, because I know because of Manoj, I have also been introduced to your SIT community, because there are so many good-willed, dynamic, like-minded people here. If each one could, or if we could identify one small area, and each one in their space, in their apartment, because see, 4,000 is not much. We can individually each one take it. And can we make the start? And I think it's only the example that works. Even what we have learned is by seeing our parents. Whatever theory school has taught us is finally practical hands-on solution. So as he said, people are convinced, but they will never do it because we have tamas in us. We are inherently very tamasic. वो कौन उठा के जाएगा करेगा. So can we, other than at the education level, we have to make it convenient to people. We have to make it not just, it's a solution, but how can we bring it in their daily habit? It's like we have a habit daily of having bath. Nobody can give us bath. We have to have our own bath. It's as important as that. This is something that we are flushing out in our daily use. So starting with any spaces that we are all connected in, start individual, decentralized home composting. Like even we can just question ourselves, those who are here in the meet, how many of us do it ourselves? Do we do it or not? So can we start? Charity begins at home.
And I think it's like you have to just be out on the mission. And like this, today he has got connected to like-minded people like you. The fire will spread there. We hope he will come to Pondicherry. It'll spread here. So for home composting, it's not anything but the mindset. So how can we change the mindset is the challenge, I feel. Yeah, This see, is I have a question to both you and Sunil, Kirti and Sunil. See, you spoke about people needing to change. You look at our community here, there are a lot of people like me who are already doing some activity. We are engaged in our own professions. And then this is something which I do as a add-on contribution, which is a voluntary activity. Similarly, each one of us have got our own activity. Now, again, there is a problem saying that you say everybody have to do it. We can start from ourselves, but then what we do here, but I don't have the bandwidth to go and talk to everybody saying that I'm doing this. So you also do this. Okay. For that, you need people. Some kind of a bandwidth is required. Now, if I ask you both, what is it that you need to, let us say, populate? Today, you may have a circumference of maybe 2 kilometers. Let us say that you have to go to 10 kilometers radius from your house. What do you need to get it to 10 kilometers radius? Do you need more people to daily go and talk to the households there, or go to talk to the teachers? You said convincing is the problem, right? Or do you need more money so that money comes later? Money not for the money we'll talk about at the end. One is people. Yeah. Second is, do you need those kind of composting equipment, more of them? Or that is the second possibility. Third possibility is, do you need more of world-class marketing experts who can create stories, who can create content that can help the people who are convincing to get the weapons to convince? Okay. Or do you need people to talk about testimonials? What is it that you would need? Question to Sunil and Bong. And then we can convert that into money. And that money has to come. Yeah. Shall I say? I think what we need is just make it like an infrastructure, like a model that works as a business, because it does work. It is a very, like I'm sure any of us are going to be willing to engage in it if tomorrow we know it's going to reduce our carbon footstep, it's going to give us clean water, clean air. Any of us will do it. So I would suggest that maybe we help Greenie to, because he has come so far in a very strategic way. And if we can help Greenie to make it into a small scale, like the model of a corporate business, where he can employ 100 people who get trained and literally like they are on the streets. I think he mentioned that let's do privatization. There are some NGOs here who study something called garbology and things like that. But the problem with all these things is it just becomes an R&D and status, statistics. They will say so many kilos of this and so many. It doesn't get us anywhere. At the end, the whole energy is gone in making statistics. So if tomorrow we have, I tell people, there are government schools, there are private schools. There are government hotels, there are private hotels. There are government hospitals, there are private hospitals. We don't send our children to the government schools, nor do we go to these government hospitals when we have the choice. So why not give an alternative? And the government will open their hands to us because they need us and we need them. So if we can parallelly launch a kind of business model, which will be a proper paid thing, nominal, like you said, 10 rupees. What is 10 rupees? It's nothing much. If we tell people for your monthly thing, but the challenge is the garbage should be kept in your house. How many are going to be willing to do that? That is the challenge. So we have to bring in education. We have to, like he said, just films don't help. So we have to, like, I tell people I'm willing to come door to door to counsel you, but I'm not going to come door to door to collect your garbage. Okay, understood. Yeah, understood. Sunil, you have any idea on that? What is it is required? I will answer in a slightly confusing manner. Very purposeful. First thing, जो आइडिया अभी तक हमने डिस्कस किया है, बच्चों के पास जाओ, स्कूल में जाओ, डेमोन्स्ट्रेशन दे दो, आइदर स्कूल प्रोजेक्ट करो, कब मार्केटिंग का एक्सपर्ट एजेंसी लाओ, मेक अ वेरी गुड कंटेंट which is very effective content, or
as Kirti said, as Ajit ji said, there are so many ideas. Actually, we need all of these ideas. आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो confusing हो गया. We have to choose some one area. Okay, this is what it was happening with me also. So I choose one path. So जरूरी नहीं कि यही path correct है, लेकिन one path I took. हाँ, then वो NGO मोड से मैं startup मोड तक आ गया. अब स्टार्टअप मोड में मुझे बिजनेस के बारे में पता करना पड़ा कि ये अगर जब तक मैं इसका बिजनेस नहीं करूंगा ये ज्यादा रीच नहीं करेगा. एनी एक्टिविटी विच इज नॉट कमर्शियल वो सस्टेन नहीं होता है. फिर वो एनजीओ मोड के उसी एरिया में रहता है. दिस इज व्हाट आई हैव सीन इन माय लाइफ. वो ये 2 गांव कर रहे हो, 4 साल से भी 2 ही गांव कर रहे हैं. जो लोग 4 गांव में काम कर रहे थे वो काम ही कर रहे हैं. कोई तो भी एकदम वेरी हाई फाई एजेंसी है, एनजीओ इन पुणे, दे सडनली गो एंड वर्क इन सम मेलघाट और सम रिमोट एरिया. मैं बोलता हूँ कि यार पुणे में इतने प्रॉब्लम है ना, काम ही करना है तो एकदम सब डिप्राइव्ड कम्युनिटी ढूंढने की जरूरत नहीं है. जो हिंदी लोग हैं इनके बीच में कितना प्रॉब्लम. Yeah, so okay, yeah. हाँ, तो the solution is simple. We have to make it like a lifestyle product. Yeah. If it is lifestyle product, people will buy. Like पिछले 10 सालों में the most helpful product is actually mobile phone. कितने पेपर बचा होगा इसमें, लेकिन they didn't sell it as a saving paper by mobile. ऐसा कभी ऐड नहीं हुआ. Convenience था, people started buying and then it become a lifestyle product. So अरे मेरे पास एप्पल है, मेरे पास माँ है, वैसा हो गया वो. Sunil, you have given one confusion. I'll give you one suggestion. You tell me whether it's a vision or an illusion. क्या बात है. I will give you a school. I'll make the school invest in that, your mixer. There are 700 students. We'll train the students to put all their food waste into that, because that school is a lower middle class, but the food is coming from ISKCON. Okay. Oh. And I will make them to give a land which is 50 feet by 100 feet. If the students get together and grow something there, I think this will be the greatest experiment which can be done. How do you feel? It's a vision or an illusion? Yes, this is a vision. This is not illusion. सबसे most important, most of the time, the vision seems very innocent. I tried my best to avoid the innocence. I have discussed with Kirti when I was in Pondicherry कि हाँ एक डिपार्टमेंट में एक बंदा होता है. I'm very agree with her कि सारे करप्ट नहीं है, लेकिन कोई भी पार्टी आने दो ये यही रहेगा. एक टाइम था जब हम लोग बचपन में दूध लाने के लिए जाते थे, तो एक दूध का सेंटर होता था. तो सेंटर पे जाके 2 बॉटल लेके जाओ, माँ गाली देती थी कि जाओ, फिर उसके बाद वो बोलता था छुट्टा पैसा दे दो, ये नहीं चलेगा. फिर लाइन लगाते थे और पैसा देते थे और दूध लेते थे 2 बॉटल. फिर वो कार्ड में लिखता था कि आपको दिया, आपको रेशन कार्ड जैसा. करेक्ट. क्या हो गया अभी, धीरे धीरे दूध का प्राइवेटाइजेशन हो गया. And you get दूध at any nearest shop. और आपके घर पे भी आता है सुबह, या any bakery or any sweet shop. अगर धीरे धीरे if we vision रख के प्लान करें कि इसका प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, कि हर जो क्या जितने भी ऑब्जेक्ट्स है कचरे में, Sunil ji, प्लास्टिक है ये. Sunil ji, I will share my joy in giving one school for you. It is a 56-acre campus school. I'll share it with you. I'll install a machine there. So very good. First of all, I'm really inspired because we are running out of time. We just stick on so that I don't waste your time. Thanks a lot, Sunil. It was really inspiring, and you got 2 schools, and then some ideas which we can follow up. I'll also get back to each one of you to see how to make it a little more viable model. And before we end, and before I hand over to Amar to conclude, as he always does, I would like to mention something which I feel is important. When I spoke to Sunil the first time, he said, "Sir, I've not done any presentation at all. I don't know whether I can do it at all or not. I've never done such a presentation in life. What do I do and all that." So मैं इसलिए थोड़ा सोच रहा हूँ.
And then after that, he said, "Nahi, nahi, nahi, abhi karunga, main karunga." So I said, "You kar." It's a simple talking. That's all. There's no big deal in that. So with that background, what Sunil has done is really outstanding. I really compliment you for that, and hearty congratulations, Thank Sunil, you. for taking the Thank first step. you. Now I think you would become the Amitabh Bachchan of such presentations. Thank you so much. Thank you very much. And Thank over to you you, very much. Amarji. Please go on. Yeah, good evening, Dinakar and good evening, Sunilji. Manoj had already shared his views with me about you and asked me to talk to you. A wonderful work that you are carrying on, Sunilji. So, environment has been a big subject that has been the talk of year on year in every developing country. We need people like you to bring in a process and a awareness. I think so. This will be a big subject that will be adopted by many, I'm sure, because as we grow, environment will be the next. As we are bringing concrete jungles, waste dumping will be a big issue. And as you said rightly, that transportation is the biggest issue, and dump yards of wastage are being formed in every city today, leading to a lot of other issues, medical health issues. Kirti Chandakji, nice seeing you about your explanation today. Wonderful thought you have, Kirtiji. And Sunilji, I'm sure that we will connect to more people, as Ajitji has been sharing his joy with this platform. I wish you all the best in your projects, and my support to you as a Rotarian. And Rotary, I will tell you, this year has added one of the key focus areas of this environment as one of its key focus areas. I will definitely, me and Manoj will work hard to connect you to more clubs pan-India about what you do and share your thoughts with them. Thank you so much for this thoughtful. I'm really thankful and touched what you said just now. But one more person's name I must mention here is Manoj, because when Dinkarji called me and asked, I was scared because I मेरा English का बहुत ज़्यादा problem होता है. कीर्ति को भी मैंने बोला था. नहीं So नहीं, I डरने कोई was बात ही नहीं very, सर, डरने कोई I बात was नहीं है. very hesitant. But नहीं Manoj नहीं. ji really pushed me. मतलब push is not a very good word. Kicked me. So he pushed me. नहीं करना ही है. आओ एक पोस्टपोन किया हमने एक एक्चुअली थर्सडे, ये लास्ट थर्सडे को होने वाला था. मैं डर के बोला नहीं बाद में करते हैं. मनोज जी pushed नहीं me. नहीं नहीं, So अच्छा I'm लगा thankful आपसे to मिलके. him. कुछ सीखने को मिला Same सर, here. कुछ सीखने को मिला. मेरी छोटे भाई की मिसेस जो है, she works in a bigger way on the environment. I will connect her to you. Okay, great. अभी तो घर में हमारे यहाँ भागवत बैठी है तो सब बिजी उसी में है, लेकिन मैं आपको उनका नंबर शेयर करूंगा. She has won several recognition from the government of Karnataka also for her work on environment. So I will definitely share with you her numbers, and we will keep connected, sir. We will keep as Yes, sure. this is a work that needs to be brought into more focus, I say. एक क्वेश्चन है मेरा छोटा बोलिए सा सर. जाते जाते. व्हाट आई एम लुकिंग फॉर राइट नाउ, जो हम लोग प्रोडक्शन के लिए हमको गाइडेंस चाहिए या मतलब बड़े स्केल पे प्रोडक्शन, आई थिंक वी नीड अ 5 लाख कंपोस्टर. दैट इज व्हाट वी आर प्लान टू सेव. ओके, सो बिगर स्केल में प्रोडक्शन. सेकंड थिंग, उसके लिए फंड्स लगेंगे, तो भी आज ही से दिनकर जी की वो भी हो जाएगा. फर्स्ट थिंग मुझे लगता है अभी बेंगलोर में ना कोई मुझे ऐसा स्टॉकिस्ट चाहिए. उसके लिए अगर आपकी पहचान में कोई है कि हाँ ये बंदा स्टॉकिस्ट बन सकता है, he will get some percentage कि हम लोग वहां से उनके पास भेजेंगे एंड देन वहां से डिस्ट्रीब्यूट होगा. So we'll have a hub every time sending some one machine individually to. तो आप जरा देखो if we can get someone. Sure, sir. Sure. Thank you so much. Thank you very much. Thank you, and then thank you so much. next week Thank you so we'll much. meet again. Thank you. Bye bye. Thank you, Sunil. Thank you, Yes. sir. Good night. Ajit ji, we will meet. Bye. See you. Thank you. Yeah.